The vibration of crystal with monatomic basis. Consider the elastic vibrations of a crystal with one atom in the primitive cell. We want to find frequency uh, of an elastic wave in terms of wave vector k. Frequency in terms of wave vector k. Uh, that describes the wave and in terms of elastic constants. And in terms of elastic constants. So the mathematical solution is simplest in 1 0 1 1 0 and 1 1 1 propagation directions in cubic crystals. These are directions of the cube edge, face diagonal, and body diagonal. Cube edge, face diagonal, and body diagonal. So this uh, wait, simplest in the these are directions of the cube edge, पीछे वाला cube edge, face diagonal, ऐसे वाला या फिर ऐसे वाला या फिर ऐसे वाला, दैट वन, या वो वाला होगा फेस डायगोनल एंड क्यूब एज, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला एज और पीछे वाला एज. These are directions of the cube edge, face diagonal and body diagonal. When a wave propagates along one of these directions, entire planes of atoms move in phase with displacement either parallel or perpendicular to the direction of wave. So when propagates, uh, planes move together, planes move together, and displacement is like this or like this, perpendicular in the direction. We can describe with single coordinate us the displacement of plane s from its equilibrium position. The problem is now one dimensional. ठीक है, because whole planes move, तो whole plane को एक से represent कर सकते हैं. So it's one dimensional. For each wave vector there are three modes as solution, three modes as solutions. So us, one of the longest polarization, one is longitudinal and two are transverse polarizations. So one is in the direction of the wave, two is like this, and three is like this, that is perpendicular to the direction of the wave. We assume that elastic response of it's figure 3, let's see figure 3, figure 4, uh, so dash line, तो ट्रांसवर्स वेव दो टाइप का हो सकता है. यहाँ पे एक ही शो किया है और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल, हाँ लॉन्गिट्यूडनल लिखा हुआ है यहाँ पे, longitudinal wave. We assume that the elastic response of crystal is a linear function of forces. Okay, note this. क्या है? Linear function of forces. So force का एक ये रहेगा, क्या बोलता है, सिंगल पावर रहेगा. Linear function of forces. That is equivalent to the assumption that elastic energy is a quadratic function related to displacement of any 2 points in the crystal. ठीक है, तो ये वाला चीज़ डबल डेरिवेटिव आ गया डिस्प्लेसमेंट के लिए. क्वाड्रेटिक, क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी 2 पॉइंट्स. रिलेटिव डिस्टेंस 2 पॉइंट्स का होगा, डिस्प्लेसमेंट 1 पॉइंट का होता है. 2 पॉइंट्स इन अ क्रिस्टल. द terms in the energy that are linear in the displacement will vanish in equilibrium. See minimum in 3.6,
figure, cubic and higher terms may be neglected for sufficiently small small elastic deformations. ठीक है, तो यही चीज़ बाद में इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन का भी स्टडी एक है। लास्ट क्या बताया ना, हम जो ये सब है क्यूबिक एंड हायर ऑर्डर टर्म्स में भी नेग्लेक्टेड। 3.6 3.6 का दैट इज ये quadratic function for relative displacement. Terms in energy that are linear in displacement will vanish. That are linear in displacement vanish in equilibrium. It is 1, 2, 3, 4, 5, 6. पता नहीं है, नहीं समझ में। Okay. We assume that the force on plane S caused by displacement of plane S plus P is proportional to the difference uh, U S plus P. ठीक है, तो ये assumption में आगे बढ़ना है। US plus P minus US. The displacements for brevity we consider only nearest neighbor interactions. P will be plus minus 1. The total force on S from planes S plus minus 1 S plus minus 1 from planes S plus minus 1, S के आगे वाला और S के पीछे वाला है। F S is equal to C multiplied by U plus S और U S का डिफरेंस, इधर फिर C इंटू U से पहले वाला S माइनस 1 और U S का डिफरेंस। द एक्सप्रेशन इज लीनियर इन डिस्प्लेसमेंट्स एंड यहाँ पे लीनियर इन डिस्प्लेसमेंट्स and is of the form of Hooke's law. The constant C is the force constant between the nearest neighbor planes and will differ for long and transverse longitudinal and transverse waves. ठीक है, अलग अलग मोड्स के लिए अलग अलग C होगा। ठीक है, डिफरेंट मोड्स डिफरेंट C। ठीक है, द एक्सप्रेशन इज लीनियर ये it is convenient hereafter to regard C as defined for one atom of a plane so that Fs is a force on one atom on a plane। ठीक है, तो ये सेम तुम्हारा इक्विवेलेंट टू वन एटम वाला सॉल्व करेंगे सब कुछ निकलेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एन एटम इन अ प्लेन S इज दिस। F हो गया m इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन d स्क्वायर d2 US by dt स्क्वायर इज इक्वल टू C। तो जो डिफरेंस था यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड अप होके पहले वाला या बाद वाला डिस्प्लेसमेंट पहले वाला डिस्प्लेसमेंट माइनस 2 US। ठीक है, माइनस 2 टाइम्स जो ये वाला है, तो वही हुआ था, देख लेते हैं। हाँ, इधर भी US माइनस हुआ है, इधर भी US ही माइनस हुआ है दोनों केस में। सो where m is the mass of an atom, we look for solutions with all displacements having the time dependency क्या है, टाइम डिपेंडेंसी exponential of minus I omega t. We look for solutions with all displacements having the time display dependence ये। now see टाइम डिपेंडेंस ऐसा होने से सोल्यूशन आएगा। ठीक है, मैथमेटिकल हैक यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सो आई ओमेगा टी, और ये फ्रीक्वेंसी भी देता है, इसलिए हम लोग एक्सपोनेंशियल आई माइनस आई ओमेगा टी यूज कर रहे हैं। Where m is the mass, we look for solutions of all displacement having time dependence ये। then d ये acceleration is equal to minus omega square u।
acceleration is equal to minus omega square u. This becomes m, यहाँ पे था m acceleration, तो माइनस m ओमेगा स्क्वायर यूएस, c इज इक्वल टू c ब्रैकेट में पहले वाला बाद वाला माइनस 2u अभी वाला. This is the difference equation in the displacements u and has traveling wave solution of the form A. So this is the this this one, ये वाला ये क्या है, is the difference equation. ठीक है, difference equation माइनस वन साइन सब आ गया. ठीक है, दिस इज डिफरेंस इक्वेशन. उसका सोल्यूशन ऐसा दिखता है, u u इसका e का. ठीक है, ये s माइनस प्लस वन के लिए. ठीक है, ये है सोल्यूशन का फॉर्म. नाउ वेयर a is the spacing between the planes and k is the wave vector, the value. ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्पेस और वेव वेक्टर यूज कर रहे. द वैल्यू to use for a will depend on the direction of k with 4 and 3 equations 4 and 3. ठीक है, द सोल्यूशन, और ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, डिफरेंस इक्वेशन से क्या आ रहा है, ये सॉल्व करके लाया. ठीक है, रीफीड इन किया उसमें, तो ये आएगा इतना लंबा सा, क्योंकि ये लेना था, सिंपल था. यहाँ पे u क्या होगा, u होगा u एक्सपोनेंशियल आई के ए. ठीक है, तो बाकी सबको सब्सटीट्यूट किया है. ठीक है, कैंसल u इसका एक्सपोनेंशियल ऑफ इसका from both, so we have what, we get this again. So omega square m, ठीक है, is equal to एक्सपोनेंशियल आई के ए एक्सपोनेंशियल माइनस आई के ए माइनस टू. और माइनस को या तो यहाँ रखते या तो यहाँ रखते, माइनस को यहाँ रख दिया है. ठीक है, एक्सपोनेंशियल आई के ए एक्सपोनेंशियल माइनस आई के ए और माइनस टू with the identity 2 cos ka is equal to exponential I ka plus exponential minus I ka. So यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया. ठीक है, जो शायद किसी को मालूम होना चाहिए. ठीक है, तो 2 cos ka is equal to exponential of I ka plus exponential of minus I ka. We have the dispersion relation for omega for k. So omega has a depending on k. ठीक है, तो ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइन क्या है, 2c/m 1 माइनस कॉस के ए. 2c/m 1 माइनस कॉस के ए, 2c/m 1 माइनस कॉस के ए. The boundary of first Boolean zone lies in pi by a, plus minus pi by a. This thing we show from 7, जो कि है रिलेशन ऑफ डिस्पर्शन. इससे हम लोग क्या पता चल रहा है कि द स्लोप ऑफ ओमेगा वर्सेस के इज जीरो एट जोन बाउंड्री. ठीक है, जोन बाउंड्री क्या था, जोन बाउंड्री था ये. सो स्लोप ऑफ ओमेगा इज जीरो एट जोन बाउंड्री. सो डी ओमेगा स्क्वायर बाय डी के, तो वहाँ पे ये वाला ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ही ग्राफ है यहाँ पे. तो ठीक है, इट्स ज़ीरो ज़ीरो ही है, देख लो यहाँ पे और यहाँ पे. ठीक है, 2c a. ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टू पहले था 2c बाय m खाली था. यहाँ पे 2c/a/m, यहाँ था 1 माइनस कॉस के ए. यहाँ पे स्लोप के लिए है ओमेगा स्क्वायर का, लेकिन ठीक है साइन के ए.
at k equal to plus minus pi by a. For here sin ka is equal to sin of पाई बाय ए, ठीक है, क्योंकि ए यहाँ पे आ गया, साइन साइन पाई बाय ए इज इक्वल टू जीरो. द स्पेशल सिग्निफिकेंस ऑफ फोनॉन वेक्टर दैट लाई ऑन द जोन बाउंड्री इज डेवलप्ड इन फॉलोइंग इक्वेशंस. ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ फोनॉन वेव वेक्टर्स दैट लाइन ऑन द जोन बाउंड्री. जोन बाउंड्री में क्या होता है इन वेव्स के साथ, ठीक है, जोन बाउंड्री में क्या होता है. बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ओमेगा स्क्वायर फोर सी, ये ठीक है, यहाँ पे किसको कन्वर्ट किया, वन, ये जो तुम्हारा वन माइनस कॉस के ए को कन्वर्ट किया है साइन स्क्वायर हाफ ऑफ के ए. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ यूज़ किया है. यहाँ पे फोर आ जाएगा, यहाँ पे ए कुछ नहीं है, ठीक है, के ए अंदर में ही है, जैसे यहाँ पे ए अंदर में है. ठीक है, फिर इसमें इसका जब यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ जब ये करेगा स्क्वायर हटाएगा तो सब मॉड में आ जाएगा. ये रूट का साइन और ये मॉड में साइन हाफ ऑफ के ए. ठीक है, तो ये ग्राफ बनेगा. ये है जोन, फर्स्ट बिलियन जोन. ये है वन, यहाँ पे वन रहेगा. ये है ओमेगा फोर सी बाय एम हाफ. ठीक है, मतलब ये साइन इसका ग्राफ बना रहा है, साइन ए का ग्राफ. ठीक है, ये वाला इक्वेशन है. ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाला इक्वेशन है. और ये क्या है, इधर भी वही लिखा है, साइन हाफ के ए. ठीक है, ये तो इक्वेशन हो गया. प्लॉट ये द रीजन ऑफ के लेस देन वन बाय ए और लैम्डा ग्रेटर देन ए corresponds to continuum. Here omega is direct proportional to k. Omega is directly proportional to k. ये वाला होगा कि लेस देन वन बाय ए ग्रेटर देन, नहीं ये वाला रीजन, ये वाला स्टार्टिंग वाला जिसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लैम्डा मच ग्रेटर देन ए. ठीक है, तो ये वाला बैग्स रिफ्लेक्शन ये क्वेश्चन था. देखते हैं कितना ये लिखने की जरूरत है, शायद इक्वेशन से डायरेक्ट पहुंच सकते हैं वहाँ तक. What is the range of K physically significant elastic wave? Only those in the first Williams zone. From equation number 4, which was the traveling wave solution form. The ratio of displacement of two successive planes is this. Okay, is exponential for IKA. The range minus pi plus pi for the phase KA covers all independent values of the exponential. The range is independent values of k specified by के ए है तुम्हारा माइनस पाई से प्लस पाई तक. ठीक है, तो के ए तुम्हारा आर्ग्यूमेंट था. ठीक है, इसको डिवाइड कर दो ए से. फिर द रेंज, दिस इज द फर्स्ट रेंज ऑफ द फर्स्ट बिलियन जोन इन द लीनियर लैटिस एज डिफाइंड इन. ठीक है, द एक्सट्रीम वैल्यूज आर के मैक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाय a to plus pi by a. Values of k outside the brilliant zone merely reproduce the lattice motion described by the values within these limits. We may treat k outside these limits by subtracting the integral multiple of 2 pi by a. That will give the wave vector inside these limits. Suppose k lies outside the first zone. ये ठीक है, ये मैथ्स करना पड़ेगा, हम लोग वापस आ जाएंगे. ठीक है, और फिर नया वाला जो है उसको यहाँ लिखेंगे, क्या बोलते हैं ये वाला इक्वेशन में. तो खाली इतना डिफरेंस आ जाएगा, के एक्सपोनेंशियल ऑफ आई के आ जाएगा तुम्हारा दो सरफेस का बीच का ये वाला. ठीक है, देखो ये कॉन्सेक्यूटिव सरफेस ही है. ठीक है, बिकॉज
this I to pi n का exponential is 1. Thus, displacement can always be described as a wave vector within the first zone. We note that 2 pi n by a is a reciprocal lattice vector because 2 pi by a is a reciprocal lattice vector. We note that itna is a reciprocal lattice vector. Y is a reciprocal lattice vector. Did they just repeat it? We know that 2 pi by n a. Oh, अच्छा अच्छा. ये n वाला term is a reciprocal lattice vector because तुम्हारा 2 pi by a is a reciprocal lattice vector. Thus, by subtraction of an appropriate reciprocal lattice vector from K, we always obtain equivalent wave vectors in the first zone. And the boundaries K max is equal to pi by A of the boundary zone of the solution. US is equal to U exponential of iska does not represent traveling wave but a standing wave at the zone boundaries, that is S K max A is equal to S times of pi plus minus में. Whence US is equal to U exponential of IS pi plus minus. U is equal to plus minus of A e to the power S. ठीक है, तो this is a standing wave. Alternate atoms opposite and opposite phases because US is equal to plus minus 1. According to whether S is an even or odd integer, the wave moves neither to the left nor to the right. This situation is equivalent to Bragg reflection of X-rays. The Bragg condition is satisfied. The traveling wave cannot propagate in lattice, but through the successive reflection back and forth, a standing wave is set up. ठीक है, वेव तो है लेकिन मूव खाली नहीं कर रहा है. ठीक है, the critical value of k max found here satisfy Bragg's condition. The 2d sine theta is n lambda, where theta is equal to half of pi, d is equal to a, k is equal to pi 2 pi by lambda, n is equal to 1. So lambda is equal to 2a. With X-rays, it is possible to have n equal to other integers because another integer besides unit, because the atoms present, because the amplitude of electromagnetic waves has meaning in space between atoms, but the displacement amplitude of elastic waves usually has meaning only at the atoms themselves. ठीक है? The transmission velocity packet group velocity is given as Vg is equal to dd omega by dk. Vg is equal to gradient of omega k, the gradient of frequency with respect to k. This is the velocity energy propagation of the medium with the particular dispersion relation. Equation 9. ठीक है, ये तो तुम्हारा ये तुम्हारा क्या है, रिलेशन ही है. ठीक है, तुम्हारा डिस्पर्शन रिलेशन ही है लेकिन साइन का टर्म्स में. With particular dispersion relation, the group velocity of this is equal to Vg is equal to Ca square by m root उसका cos half Ka. This is, ठीक है, root of Ca square by m cos half of Ka. This is 0 at edge of zone where K is equal to half pi by A. Here the wave is standing wave as in 12, and we expect the zero net transmission velocity for standing wave. We expect zero net transmission velocity. ठीक है, at the zone boundary. Long wavelength लेट भी है. ठीक है, long wavelength in the long wavelength k is much less than 1. K by a is we expand it to cos ka is equal to ये ठीक है, binomial expansion 1 minus half of ka square, so that the dispersion relation is omega cm c by m k square a square. The result that frequency is directly proportional. The result that frequency is directly proportional to the wave vector in the long wavelength limit is equal
is equivalent to the statement that velocity of sound is independent of frequency in this limit. Thus, V omega by k is exactly the continuum theory of elastic waves. The continuum like k much less than 1. क्या लिखा है? The result of is that the frequency is directly proportional to the wave vector in the long wavelength limit is equal to the velocity of sound independent. ठीक है, तो लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट में हम लोग साउंड वापस आ गया. ठीक है, ये सबका ये सेम रहता है, क्या बोलते हैं, velocity सेम रहता है. The result is that frequency is directly proportional. The wave vector in the long wavelength limit is equivalent to the statement the velocity of sound is independent of frequency in this limit. So, is this equation is the continuum theory of elastic wave, the continuum that ka is much less than 1. Sounds like a. Let's see.